Good afternoon, dear students. I am Smita Patel from TPS High School, Bandpali. Welcome you all to this live virtual class from our Sundargarh district. Dear student, now your exam is approaching. I know you all are preparing for your exam. But dear students, during this preparation, first of all, you should focus on PYQ. What is the meaning of this PYQ? You have to, first of all, solve these previous year questions. Okay, take 2 hours time and try to solve this any of your previous year question you take, and just try to finish within that 2 hours time, and then after finishing you check by yourself whatever mistake you have done, or whatever thing you left out in that question in answer set. First you find out that one, then work on that. Okay, this will help you to know about your weak points and your what are the things you remember or not. So dear students, best of luck you for your exam, and hope you will try to do previous year question and also solve it within that timetable. So today we will practice your two beautiful chapter, that is Missile Man of India and the Trunk of Ganesha. So let's go to the smart board and revise that one. So dear students, today we will revise a beautiful chapter which is the Missile Man of India. So you know everything about this chapter. This chapter is of only 1 or 2 pages, but you have to, every line is important of this chapter. So first we will summarize this one. What is in introduction? Dr. APJ Abdul Kalam was a great scientist and leader that you know, who made India proud. He was known as the Missile Man of India because of his work and space technology on missiles. He worked on missiles and space technology. Nahin? Kalam was born on October 15, 1931 in Rameswaram, which is present in which state? In Tamil Nadu. नहीं, अब्दुल कलाम कोठी जन्मग्रहण करथिले रामेश्वरम रे, जोटा कि तमिलनाडु स्टेट रे अछि नहीं. एंड अर्ली लाइफ, तांका अर्ली लाइफ विषय रे हम जानिछो से कोठी ही वाज बोर्न इन पुअर फैमिली नहीं, से पुअर फैमिली रे बोर्न करथिले, किंतु तांकर एंसेस्टर्स माने they had been a great business and trade holders, but gradually they became poor नहीं. He was very bright, से bright student थिले एवं बहुत hard working थिले नहीं, से इसकी excellent न थिले, but he was very much hard working, से बहुत परिश्रम करथिले एवं तांकर सेही परिश्रम रे तांकू हेल्प करथिले किए, तांकू बहुत इंस्पायर करूथिले किए, तांकर साइंस टीचर. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट साइंस टीचर? Siva Subramanya Iyer. So he was the science teacher, and from his childhood he was bright and hardworking student who loved to do which subject? Mathematics and physics, nahi, and science. Kalam's teachers Siva Subramanyam Iyer encouraged him to pursue his dream. तांको ड्रीम को से केमती अचीव करि परिबे सेतिबे तांको को टीचर तांको साइंस टीचर तांको ना थले कोन शिव सुब्रमण्यम अय्यर. एगुडा सब तुमे आमे टिके रिवाइज कर दोछु, तापरे आमे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देन क्वेश्चंस गुडी को रिवाइज करबा. देन एजुकेशन, अबाउट हिज एजुकेशन. एलिमेंटरी एजुकेशन तो से कोठी करथिले रामनाथपुरम रे करथिले, किंतु तांकर तापरे से हायर सेकेंडरी कोठी गले स्क्वाड हायर सेकेंडरी स्कूल रे नहीं, एंड देन एट सेंट जोसेफ कॉलेज रे से पाठ पढ़थिले एवं से जेहेतु कोन करबा पे जो साइंटिस्ट हेबा पई चाहूथिले आ स्पेशली तांकर इंटरेस्ट थिला को रे एरोस्पेस इंजीनियरिंग रे नहीं, तेनु से ग्रेजुएशन कले को रे फिजिक्स सब्जेक्ट रे नहीं. को सब्जेक्ट रे ग्रेजुएशन से कंप्लीट कले physics subject रे in physics in 1954. You have to remember this year also, 1954, and then studied what? Aerospace engineering at Madras Institute of Technology.
एवं से मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रे पाठ पढ़िबा पई सहज विषय नथला काहेकि ना तांकू माने बहुत अमाउंट पे करबा को पड़थला जो थिरे कि तांकू किए हेल्प करथिले असीम जोरा तांको नानी रो नाम तांकर के फोर ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड फोर ब्रदर्स एंड वन सिस्टर तांकर ना थिला कोन असीम जोरा और जी हेल्प करले तांकू कोन तांको ऑर्नामेंट सबु से कौन गहना से ये पके के कौन करथिले तांको भाई को हेल्प करथिले नहीं पे हेल्प हिम पे फॉर हिज एजुकेशन बाय मॉर्गेजिंग हर गोल्ड ऑर्नामेंट तांको ऑर्नामेंट दे से टंका धारा आनी कौन करथिले तांको भाई को पढ़िबा पई कोठी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रे पढ़िबा पई से हेल्प करथिले दिस वन यू नो ओके अबाउट हिज करियर तांकर करियर कोठु स्टार्ट हितला Kalam started his career as a trainee. कोड स्टार्ट करथिले हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हाल रे नहीं फर्स्ट से हाल रे तांकर हाल जोटा कि कोठी अछि बेंगलोर रे अछि से फर्स्ट सेठी एज ए ट्रेनी करियर तांकर स्टार्ट करथिले he then joined defense research development organization तापरे DRDO नहीं DRDO what is the full form of DRDO defense research development organization DRDO रे से काम करथिले जोठी से विभिन्न मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम मानंगरे तांकर कंट्रीब्यूशन बहुत रहिछि कलाम वाज ट्रांसफर टू तापरे से कोठी को ट्रांसफर होइतले इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को से 1961 रे ट्रांसफर होइतले एंड वर्कड ऑन द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सेठी से प्रोजेक्ट डायरेक्टर हिसाब रे ही वाज वर्कड एज द हेड ऑफ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ व्हिच वन लॉन्च व्हीकल नहीं SLV-3 रो प्रोजेक्ट रे से काम करथिले नेक्स्ट कलाम सक्सेसफुली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च तांकर डायरेक्ट सुपरविजन रे लॉन्च हेला व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सैटेलाइट रोहिणी नहीं देन इनटू द ऑर्बिट सक्सेसफुली से माने से माने पठै पाटले कोठी केते मथिया रे 1980 रे यू हैव टू रिमेंबर दिस year also. So in 1980 they successfully launched which one? Rohini satellite. He developed several missiles. He developed various missiles named Prithvi, Trishul and Akash and Nag. This is the event which helped him to known as the missile man of India. नहीं ये जो इन्वेंट से जो तांकर सक्सेसफुली से विभिन्न मिसाइल प्रोग्राम जो सक्सेसफुली से ऑर्गेनाइज करिथिले सेतिपई तांको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोली कुहा जाय कलाम सुपरवाइज द पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट तांकर सुपरविजन रे पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट होइतला केते मसिया रे 1988 रे नहीं 1988 रे एरा मने रखिबो 98 रे हमरो पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट होइतला कोडी राजस्थान रे नहीं and was appointed as the chief scientific advisor to the prime minister एहा परे तांकु chief scientific advisor of prime minister तांकु अपॉइंट करागला नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से बहुत कोन अवार्ड द्वारा सम्मानित होइथिले को अवार्ड ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन on space research scientist तापरे साइंस तापरे टेक्नोलॉजी विभिन्न प्रोग्राम रे तांकर ग्रेट कंट्रीब्यूशन पाई तांको प्रथमे कोन को पुरस्कार दियला तांकर प्रथमे पद्म भूषण रे सम्मानित कराइतला नहीं तापरे आसला तांकर पद्म विभूषण देन भारत रत्न मध्य दियाइतला ही वाज इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट तापरे से इलेक्टेड हेतले as a 11th president in 2002 आउ केते पर्यंत से प्रेसिडेंट भाबरे काम करले 2007 नहीं he was known as the people's president too so Kalam's legacy continues to inspire young people to pursue their dreams and contribute to the nation's development तांकर जो एही प्रकार कोन डिफरेंट तांकर कंट्रीब्यूशन तांकर जो कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज डेवलपमेंट हमको मिलिटरी रे हो किंबा हमर मिसाइल डेवलपमेंट रे हो तांकर कंट्रीब्यूशन बहुत यंग पीपल मानन को इंस्पायर करि थाए कोन पई हमर तांको साइंस टेक्नोलॉजी ऊपर काम करिवा पई तापरे स्पेस रिसर्च रे
पढ़िबा पई इंस्पायर करथे. So he was also proudly known as the missile man of India and a great leader for who made India proud. Now we will do the multiple choice question. I hope you will answer every question. How did Dr. Kalam's teacher Siva Subramanya Iyer influence his life and career? Okay, try to give the answer. Yes, which school want to give the answer? How did Kalam's teacher Siva Subramanyam Iyer influence his life and career? Okay, raise your hand. Read every option, then try to give the answer. Which one will be the right one? Option C. Option? Option C. C. Try to read that option. कौन लिखा है पढ़ो से ऑप्शन टी को पढ़ो. He helped. Yes. He helped Dr. Kalam develop his skill in mathematics and science. And science. Very good. Very good. Next. He helped Dr. Kalam develop his skill in mathematics and science. से कलाम को हेल्प करिथिले. से बहुत लविंग एंड एफेक्शनेट टीचर थिले. शिव सुब्रमण्यम अय्यर तांको बहुत भलो पाउथिले. आ से सदा तांको कोन करथिले, तांको मोटिवेट करथिले पढिबा पई, so that he will able to compete with the student of class, student of town रो पिला मानक सहित से जेमती compete करि पारिबे सेति तांको से कोन प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस करिया पई तापरे सेथिरे बेसी कोन बहुत परिश्रम करिवा पई तांको सदा बेले तांको उत्साहित करूथिले नै. So Dr. Kalam developed his skill in mathematics and science, which ultimately helped him to pursue career in aerospace engineering रे तांको career करिवा पई से हेल्प करथिला. Next, what was the significance of the Rohini satellite launched in 1980 and how did it impact Dr. Kalam's career? Which one will be the right one? What was the significance of Rohini satellite launched in? Option B. Very good. It was the right answer. It was the first satellite launched by India and it is established Dr. Kalam as a leading figure in the country's space program. नहीं से हमारा डायरेक्टर थिले कौन SLV3 जो लॉन्च सेटा लॉन्च जो सैटेलाइट लॉन्च करे सेटा से प्रोग्राम रे मध्य से कोन थिले डायरेक्टर थिले. देन तांकर डायरेक्ट सुपरविजन रे हमारा रोहिणी सैटेलाइट फर्स्ट 1980 रे सक्सेसफुली ऑर्बिट टू से पठेई पारथिले नहीं. सो दिस वन इज द राइट वन. नेक्स्ट, हाउ डिड डॉक्टर कलाम्स एक्सपीरियंस एज ए ट्रेनी at the Hindustan Aeronautics Limited HAL shape his future career? Which one will be the right one? Read every option carefully. It's the easy one. Try to give the answer. Option B. Yes. Option B is the right one. Very good. It helped him develop skill in aerospace engineering. देखो तुम डी रे तमे जदि भोल से न देखि कि तमे जदि करदब सेटा तमर एठी कोन लिखाइ छि इट डिस्करेज नहीं डिस्करेज लिखाइ छि. से अनुसार तुमे सब ऑप्शन को भलो भाबरे देखि कि तापरे तुमे टिक करबो. द चैप्टर मेंशन दैट डॉक्टर कलाम्स एक्सपीरियंस एज ए ट्रेनी एट HAL helped him to develop skill in aerospace engineering, which ultimately led him to pursue career in that field itself. Next, what was the impact of the Pokhran 2 nuclear test on Dr. Kalam's career and reputation? Pokhran 2 जो न्यूक्लियर टेस्ट हला ताहा केमिति तांको फ्यूचर को लीड करिथिला. Read out every option, then try to give the answer. Option A. Mark the beginning of his career as a scientist. सब ऑप्शन को भलो भाबरे देखो. Option B. It established him as a leading figure in India nuclear program. Very good. This one is the right one. It mentions that Pokhran 2 nuclear test for a
जोटा कि 1988 रे नहीं that makes significant milestone in India's nuclear program and it established Dr. Kalam as leading figure in the country's nuclear program नहीं तांको leading figure हिसाब रे ताहा तांको आगो को नहीं थिला तो हमरो कलाम को how did Dr. Kalam's presidency impact the country and what were some of his notable achievements during his tenure? Yes, read out every option carefully and try to give the answer. Option D. Was no सब ऑप्शन गुड़ी को भलो भाबरे देखो ओके ऑप्शन सी इज द राइट वन ओके he focused on education and healthcare reform. Next, what was the significance of Dr. Kalam's Bharat Ratna award in 1997 and how did it reflect his contribution to the country? Option yes? A. Yes, very good. Option A. Option A is the right one. Very good. Next, what was Dr. Kalam's position in the Indian government from 2002 to 2007? President. Option B. President. President. The right. Option B. What is Dr. Kalam's legacy in India? Yes, try to give the answer. Read out every option. Option A. Yes. Option A. He is Option remembered A. as a great scientist and leader. नहीं से साइंटिस्ट और लीडर हिसाब रे जଣା सुना. Next, what was Dr. Kalam's first job after completing his education? Option B. Yes, option B is the right one. Option Very B. good. He was Hindustan Aeronautics Limited रे as a trainee join करथिले नहीं. Next we will discuss 2.5 mark question. What was Dr. Kalam's early life like? तांकर early life केमती थिला? Here some key words are given, so it will be easy for you to give the answer. Try to give the answer. What was Dr. Kalam's early life like? तमे चेष्टा करिवो जेंती हेले किछि हेले तांको विषय रे लेखिबा पई नै डॉक्टर कलाम का अर्ली लाइफ केमती थिला देखो एथरे केतेटा की पॉइंट्स को दे रही थी से बेसिस रे तमे आंसर लेखि पाइबो ट्राई टू गिव द आंसर जणे गोटे करू नले गोटे सेंटेंस कम से कम कहिबा पई चेष्टा करो. Dr. APJ Abdul Kalam born in Rameswaram in Tamil Nadu. Very good. Very good. Yes, he was born in Rameswaram in Tamil Nadu. नहीं Tamil Nadu state रो Rameswaram रे से जन्म ग्रहण करथिले. Next, newspaper related any sentence try to say. He sell newspaper and He used to sell newspaper. And earn money his family. He used to sell newspaper to support नहीं तांको फैमिली को सपोर्ट करे टू सपोर्ट हिज फैमिली हला और फैमिलीज अर्निंग तमे कहि लेखि परिबो हला टू सपोर्ट हिज फैमिलीज अर्निंग तांको फैमिली को सपोर्ट करिया पई से कोन करथिले न्यूज़पेपर बिकुथिले. वेरी गुड. नेक्स्ट, रिलेटेड टू ब्राइट स्टूडेंट के कहबो. He was a bright student and his science teacher Siva Subramania Iyer give encourage to his skill develop. Yes, ठीक है ताको आउटके सुधार दबा. He was very bright and hardworking student and his science teacher Siva Subramaniam Iyer helped him to pursue his dream. नहीं से तांको सब बेले आ मध्य हमें सेतरे ऐड करि परिबा
his science teacher Siva Subramaniam Iyer always encouraged him to practice in such a way that he would compete with the students of town or big cities. Okay, आमे से एमिति तांको एनकरेज करथले पढ़िबा पई जे से जेमती जदि बिग सिटीज और टाउन को जानती हेले कोन करि परिबे तांको सहित से कम्पीट करि परिबे नाही. सो हाँ साइंस टीचर रो भी हेगला शिव सुब्रमण्यम अय्यर का विषय रे आमे लिखले नाही. दिस इज ऑल अबाउट अर्ली चाइल्डहुड नाही. आमे एमिति तमे गोटे गोटे सेंटेंस फॉर्मेशन करी की लिखिबो ताले तुमे आराम रे मार्क गेन करि परिबो हला. आउ एटा तमे एबे पीवाईक्यू माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नै कि जतेबेले प्रैक्टिस करिवो सेतेबेले तुमे जानि परिबो जे तमे लिखि पारुछो कि नाही. नेक्स्ट, what was Dr. Kalam's role in the development of India's missile program? What was Dr. Kalam's role in the development of India's missile program? Yes, try to give the answer. First crucial role. Forget about this. If you want to say with your own words, one sentence, then you can say. Okay. What was Dr. Kalam's role in the development of India's missile program? कौन थिला मिसाइल प्रोग्राम रे आमे बहुत जिंस अछि. दिस ए चैप्टर टा बहुत इंपोर्टेंट लाइन बाय लाइन तार ईच एंड एवरी सेंटेंस ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी मच इंपोर्टेंट नहीं. आ फुल ऑफ इंफॉर्मेशन रे भरी छि. तेनु तुमको कोनोसी गोटे सेंटेंस भी तमे स्किप करि परिबो नाही नहीं. तो ट्राई टू गिव द आंसर. यस, Dr. Kalam's का role in development of missile program कौन थिला? Only you have to write 3 to 4 sentence. So try to say one sentence. You can try. He took the leading role in missiles and nuclear weapons development program. Very good. Okay. लीडिंग रोल नहीं थिले मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम रे नहीं. आउ से कोन कोन तांको द्वारा कोन मिसाइल तांको समय रे सक्सेसफुली प्रोग्राम हे पाथिला सेउडी को कह. ट्राई टू स्पीक आउट दैट वन, दैट सेंटेंसेस. He developed Prithvi, Trishul, Akash and Nag missiles. सक्सेसफुली नहीं. ते को मिसाइल सक्सेसफुली तांको द्वारा डेवलप हे पाथिला. पृथ्वी, आकाश, Prithvi, Trishul, Akash and Nag. Very good, very good. And ए जो yes, he supervised the Pokhran 2 nuclear tests. yes, he supervised, under his supervision Pokhran 2 nuclear test was held, successfully held. And due to all these successful major missile development programs, he is known as the missile man of India. नहीं सेति पई तांको कोन कुआ जाय? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोली कुआ जाय नहीं. India. नेक्स्ट, यस, ए परि भाबरे तमे लेखिबो. आउ एटा गोटे सेंटेंस. दिस मिसाइल्स हेल्प टू एस्टैब्लिश इंडिया एज ए मेजर मिलिटरी पावर. ए जो मिसाइल्स गुडी को डेवलपमेंट हैला एहा द्वारा हमर इंडिया रो मिसाइल पावर कोन मिसाइल पावर रे से आहुरी कोन हैला, आहुरी शक्तिशाली हैला नहीं. नेक्स्ट, 5 मार्क क्वेश्चन. तमे 2.5 मार्क क्वेश्चन गुडी का 3 to 4 लाइन्स लेखि के आराम से तमे मार्क पाई परिबो. एवं किछि नहले भी जेमति तमे एमति कहिलो सेमति तमे कोन सेंटेंस गुडी को आराम से लिखि परिबो. नेक्स्ट, 5 मार्क क्वेश्चन. डिस्क्राइब द लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. सेही सब क्वेश्चन ने जेमति थिला ए गुडा को मध्य तमे आराम रे लिखि परिबो नहीं.
साइंटिस्ट लीडर जमती देखो तमे ए जिंस गुडा को इंपोर्टेंट की पॉइंट्स अटे से चैप्टर रिलेटेड से की पॉइंट्स गुडी को तमे मने रखिले मध्य तमे आराम रे से सेंटेंस गोटे गोटे सेंटेंस फॉर्मेशन करी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मध्य दे पारिबो सो ट्राई टू try to say sentence using this word one sentence also you can try. Yes, who will say? He was the project director of India's first satellite launch vehicle SLV-3. Yes. First, आमे गोटे क्वेश्चन को जिते बेले अटेंड करूछु फर्स्ट वी विल ट्राई टू राइट सेंटेंस लाइक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस आमे प्रथमे इंट्रोडक्शन टाइप रो किछि लेखिबा तमे डायरेक्ट तुमे मेन पॉइंट को बोले गलो नहीं ठीक अछि से सेंटेंस भी ठीक अछि से सेंटेंस भी आमे यूज करबा बट फर्स्ट यू हैव टू राइट वन इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ओके आमे फर्स्ट अब्दुल कलाम को किभଳି भाबरे इंट्रोड्यूस करबा जेतले ए तांको रिलेटेड क्वेश्चन आछी एबे आमे गोटे इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कोन लिखिले बेसी भल लागबो यस Dr. Kalam was born on 5th October 1931 yes in a Tamil Muslim family at yes Rameswaram. very good In the state आमे of तांको Tamil Nadu. yes very good आमे तांकर जन्म विषय रे मध्य स्टार्टिंग करी कि इंट्रोडक्शन दे परिबा नहीं very good किबा आमे तांको he was a renowned person as a great scientist and leader of India एई भाबरे मध्य तमे इंट्रोड्यूस करि परिबो तापरे से जेमती कहला सेमती मध्य आमे he was born at Rameswaram which is situated in the state Tamil Nadu नहीं एमती मध्य इंट्रोडक्शन करि परिबा तापरे हमर जो देइछि न्यूज़पेपर ब्राइट स्टूडेंट से रिलेटेड आमे जेमती प्रीवियस क्वेश्चन रे करथिले सेमती करि परिबा कोन ले कहि परिबा try to say sentences using this one yes it's very easy we have to practice one more chapter 2 the trunk of Ganesha so try to say fast yes ame eti dekho bright student achi then graduate bright student विषय रे ame कोन कहिदले he was a bright student as well as very hard working नहीं से hard working student थिले then he both रे graduate से graduation complete करथिले in which subject physics subject रे you can say that one physics subject रे से graduation complete करथिले then missile development he was he led which missile development program Prithvi Trishul Akash and Nag missile development program रे से लीडिंग रोल नहीं थिले सेटा मैं मेंशन करबा नेक्स्ट he was awarded with very what Padma Vibhushan and highest civilian honor Bharat in Ratna. 90 yes Bharat Ratna Bharat Ratna 1990 yes you can say about that and then yes 1997 रे एवं तमे से he was elected as 11th president of India in 2002 एवडा को आउ सी तांकर जो कंट्रीब्यूशन करछंती नहीं his great contribution काई तांको कोन कहैछि तांको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोली कहैछि नहीं एई भଳି भाबरे तमे फुल आंसर दबा को चेष्टा करिवो नहीं तमे जानते गोटे सिंगल सेंटेंस रु देखो हमें चाइल्डहुड रु स्टार्ट कलु तांकर ग्रेजुएशन विषय रे कलु तापरे कोन से माने मिसाइल डेवलप करछनी से विषय रे लिखिलु लास्ट रे हमरो कंक्लूजन आसी गला फॉर हिज कंट्रीब्यूशन एंड ग्रेट कंट्रीब्यूशन केवल कंट्रीब्यूशन नहीं ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑन मिसाइल वेरियस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ही वाज एंड आल्सो आमर स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एवं आमर कोन आमर रिसर्च रे तांकर कंट्रीब्यूशन पई तांको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोली आख्या दिया जायछि
Next, what were the significant contribution of Dr. APJ Abdul Kalam to India's development? Yes, try to say. This one also, like previous question, you have to say about various space program, then that SLV-3 which was directed by our APJ Abdul Kalam. Then here also you have to mention about his our different missile program developed by Abdul Kalam. That same Prithvi, Trisul, Akash and Nag, then which help him to get role in to establish our India as a major military power. जो से मिसाइल गुड़ी को डेवलप करथिले सेटा हमर इंडिया रो मिलिटरी पावर को कोन आहुरी सपोर्ट करथिला नै एहा तमे लिखि परबो. देन इन he has great role in the development of what in science and also technology, and as a president of India also he worked hard for our nation नहीं. एवं तमे से पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट विषय मध्य एठी लिखि परिबो. एबरी भाबरे तमे कंप्लीट करि परिबो. लाइक दिस, Dr. Kalam made significant contribution to India's space program. He developed SLV-3 जो develop करथिले and launched India's first satellite. What was that? Rohini, right? He also played a crucial role in India's missile program जोटा कि हमें कहिथिले. तापरे तमे तांकर रोल विषय रे लेखिलो. तापरे लास्ट रे तमे Dr. Kalam's work helped establish India as a major military power. तांकु help करथिला सेटा तमे लेखिबो. लास्ट रे तमे his contribution on him as a what? As people's president तमे लेखि परिबा. As a people's president or the missile man of India मध्य तमे लेखि परिबो. Next we will discuss about the trunk of Ganesha. I hope you understood the chapter very well and you will do more practice on that and you will do good in exam. So the trunk of Ganesha. The trunk of Ganesha रे major character first आमे देखिबा गोविंद महाराणा. First हमरो जे protagonist जे है मुख्य character अछंदी से के गोविंद महाराणा नहीं. The protagonist of the story, a skilled idol maker नहीं जे मूर्ति तैयार करथले with struggling to complete an image of Ganesha. से image of Ganesha complete करिया पे वो struggle करथले. He is the main character and the story revolves around his struggle and worry. से बहुत worry तम struggle करथले why to complete his idol which he was making नहीं. से गणेश भगवान को मूर्ति तैयारी करथले एवं ताको कंप्लीट करिया पे कोठी हमर प्रॉब्लम होतला trunk से नहीं. So he was the man. Then his wife whose name is Sulochana, Govinda's wife, who is supportive, से बहुत supportive थे and tries to help him find a solution to the problem. से सबुले तांको help करथुले कोन तांकर problem रो solution पाई. She suggests that Govinda might be tired and that's why he is making mistakes. नहीं. Then Ranju किए थिले Govinda's youngest son. से सबुठु छोटो तांकर पुत्र मध्यरु who helps him जे कि तांको help करथला with the image and stays up with him. से तांको संगरे सदाबळे थिले नाही. आउ तांको help करले to find out the cause of the problem. Next, Govinda's eldest son. किए थिले तांकर eldest son, Govinda's first child who is an irresponsible नहीं से irresponsible थिले and spent his days away from the house. से कोन गोटे माछ धराली थिले नहीं. आउ फिशिंग करिवारे तांकर दिन से जाउतला. से श्रिम्प एंड कार्प नामक माछ स्पेशली धरुथिले इन महानदी. he is not directly involved in the story. से directly involved नहांती ए स्टोरी रे, but his absence and lack of responsibility are mentioned as a source of worry of Govinda.
एटा मध्य तांकर वरीडनेस रो कारण थिला बोलिकरी तांको कथा मेंशन कराइछि तापरे गोविंदा सेकंड सन तांकर सेकंड सन के थिले सेकंड चाइल्ड हु इज एन अप्रेंटिस इन ए पेपर मिल से अप्रेंटिस भाबरे पेपर मिल रे काम करथिले नेक्स्ट he is also not directly involved in the story but his presence is mentioned as a part of Govinda's family. So there are three brothers. Nine. Tapre the cat. Tapre out important character the cat. The cat is the unexpected culprit. Culprit माने दोस्ती हमें कोई परिबा behind the breaking of the images of that trunk जो आमर तैयारी हो पार नथिला कार गोविंदांको तारंकर सेटा कारण के थिला ओटे कैट नाही it jumps onto the image and breaks the trunk causing Govinda and Ranju to realize that the problem is not supernatural तांको लास्ट रियलाइज हला जे कॉज टा कोन सी अंधविश्वास रिलेटेड नथिला but rather a simple and modern one. Okay, so what are the important events related to this? Govinda struggle to complete the image. तांकर struggling जो image टा को तांकर ideal को complete करिवार जो struggle थिला सेटा होची. The story begins with Govinda's Maharana, a skilled idol maker struggling to complete the idol. हमें idol को परिबा idol माने तांकर मूर्ति जो तैयार करथले of Ganesha. He is having trouble with the trunk of the image which keeps breaking. जोटा कि थरकु थर भांगी जाउथला. Next, the breaking of the trunk. The trunk of the idol breaks for the third time. केते थर भांगी थला? Third time नहीं. And Govinda is worried and frustrated. जेहेतु ताहा complete हे पर नथला ताहा तांकर frustration रो कारण थला. He can't understand why this is happening and thinks it might be cause of or supernatural power. से सेति पई गोटे तांकर मन भितरे कोन अछि गोटे सुपरस्टिशन अंधविश्वास विभिन्न प्रकार अंधविश्वास रे से घेरी रहिथिले जे whether it was because of his charging much means charging more money from the buyers से भाबुथिले जे मु जो अधिका चार्ज करूची मूर्ति पई सेति पई होची ना एमती विभिन्न प्रकार तांकर से भावना करूथिले. Next, Govinda's conversation with Sulochana. Govinda talks to his wife Sulochana about the problem. से problem विषय का सहित तो discuss करथिले तांको wife सहित. She suggests that it might be tired and that's why he is making mistake. Right? Next, the decision to stay up at night. तापरे decision to stay up at night means what? से गोविंदा एवं तांको सान पुओ के रंजू से माने डिसाइड करले टू stay at night to figure out what's happening to the image. नहीं ते मूर्ति तैयारी राति रे कोन होची जहा ता कंप्लीट हेबारे असुविधा होची ता प्रॉब्लम को फाइंड आउट करिया पई तांका रंजू and his father they decided to stay in that room. They want to catch the culprit behind breaking of the trunk. Next, the night vigil. Govinda जो रात्रि जागरण से कले गोविंदा एंड रंजू सिट इन द डार्क नहीं डार्क प्लेसेस से वेट करथिले एंड वेट फॉर समथिंग टू हैपन. आफ्टर ए व्हाइल दे हियर ए नॉइज एंड गोविंदा सीज ए कैट जंपिंग टू द image. So it is already लास्ट समय डिस्कवरी करले कैट को. नेक्स्ट गोविंदा लास्ट लाइन हमें देखि दबा. गोविंदा इज रिलीव्ड टू फाइंड आउट दैट द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज ए कैट नॉट अ supernatural power. He and Ranju are able to fix the image and complete it. Lastly, semane complete kariya pai complete kari pale. Now we will finish this question only 10 question quickly. Okay. So what was the significance of Govinda Maharana's profession in the story? Okay. Let's try to find out the answer. Who will give the answer? Yes. Option B. It was a means of him to support each family. No, option this one, cultural heritage. This one is the right one. Okay, time is very short. So we will discuss. What was the problem that Govinda Maharana was facing? Yes, try to give the answer quickly.
Option Which one C, is the right one? The tongue of the image. Kept breaking. The Very tongue good. of the Next, who image. suggested that Govinda might be tired and that's why he was making mistakes? किए suggest करथिला? किए तांको कहउथला? किए suggest करथला? Yes, try to give the answer quickly. Which one? किए तांको कहउथला जे से का सहित बेसी डिस्कस करथिले? तांको wife सहित what is the name of his wife? Yes, it's very easy. Sulochana. Sulochana. Se tanko wife tanko कहउथले. Very good. Next, what did Govinda and Ranju decide to do to figure out what was happening to the image? कौन कले? What they decide? Both Ranju and his father Govinda, what they decided? कौन बोले? Yes, yes. This one very easy one. They decided to stay up at night to keep watch. Option B. Yes. से राति रे जगी की देखवा पाई चेष्टा करले जे प्रकृत रे प्रॉब्लम टा कोठी अछि नहीं. They decided to stay up at night and keep watch. Next, what was the symbolic significance of the cat in the story? ये जो स्टोरी रे कैट जो दिया थी सेटा तारो सिंबलिक कौन अच्छी सिग्निफिकेंस. This option C is the right one. It represented the unpredictability of आमे बहुत समय रे एमटी जिंस Option C. Yes, option C is the right one. आमे C एटी सुपरस्टिशन अछि बोली तमे ताकू दे दबनी ठीक अछि बोली. ऑप्शन सी इज द राइट वन. सबु बेले आमे जो है जहां हमें प्रेडिक्ट करिथौ. प्रेडिक्ट माने कोन? जहां हमें हमर कल्पना करथौ जे ना एटा हेइदबो सेटा हेइदबो कि सबु बेले से जिंसटा ठीक हेइ नथे. एथरे कैट को हमर से माने चिंता भी कर नथले जे से कैट माध्यम रे कैट जोगु ही तांकर गणेश को मूर्तिटा कंप्लीट हेइ पारुनी. किंतु से जिंसटा कौन थिला? से जिंसटा ही सत्य थिला. सुपरस्टिशन किछि नथिला सेथिरे नहीं. सो इट रिप्रेजेंटेड द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ. हाउ मेनी टाइम्स डिड द ट्रंक ऑफ द इमेज ब्रेक बिफोर गोविंदा एंड रंजू डिसाइडेड टू स्टे अप एट नाइट? से जो राती रहिवा पई जो 3 times. 3 times. वेरी गुड. 3 times. Three times. नेक्स्ट, व्हाट वाज गोविंदास एल्डेस्ट सन ऑक्युपेशन? तांकर एल्डेस्ट सन कोन करूथिले? एठारे नाम मेंशन नहीं, केवल एल्डेस्ट Fisherman. Option C, fisherman. Very C. good. Option C. Yes. Who helped Govinda discover the cause of the problem? Govinda who के help करला? Ranju. Very Ranju. good. Option B. What was the result? Ranju. What was the result of Govinda and Ranju's night visit? तांको जो रात्र जागरण कले तार रिजल्ट से माने कोन बाहरला? ए ऑप्शन भितरु कोटा ठीक हबो देखो. Option C. Option C. Very good. Option Option C is C. the right one. How did Govinda feel when he discovered the cause of the problem? से जते बेले cause of the problem जानि पाले कोन कले? से कोन feel कले? Angry, relieved, sad or frustrated? Which one is the right one? Option B. Relieved. Option B. Relieved. Relieved. Option B. Very good. Relieved हेले नहीं. तो मैं ये क्वेश्चन गुड़ा को करी कि तमरो इंग्लिश टीचर को देखेबो. So dear students, I hope you understood this two chapter very well and you will do more practice. And before that, as I have said earlier, you have to focus on PYQ, previous year question. You take 2 hours and try to give the answer and also check by yourself, or if you want to check by your teacher, then also request your teacher to check your copy and suggest you whatever necessary for your exam. Okay. Thank you, dear students.